Hi everyone, myself Dr. Kapil Kapoor. I am physio from Haryana. So I am pursuing my MPT in musculoskeletal and sports conditions from Sanskrit University, Mathura. So first of all, I would like to congratulate our whole physio family on this auspicious occasion of World Physiotherapy Day. So it is very proud moment for all the physios across the globe. So on this auspicious occasion, I am going to present a topic that is patellar dislocations. So let's get started, guys. Just a second, let me share the screen. Yeah, okay. So patellar dislocations. So in this, we will discuss about what are the patellar dislocation, how it occurs, what are the mechanisms of injury, predisposing factors. Okay, so what is the physiotherapy management, surgical management also in some cases. So basically, patellar dislocation. Before discussing this topic, I would like to discuss two terms. One is a subluxation and other one is a dislocation. So subluxation is somewhat a joint is get subluxate or out of their anatomical plane, but it is relocated without any external force. But in dislocation, if the bone is out of the alignment or out of its plane, out of its anatomical location, it will need some external force to relocate at its original site. So basically, the difference between subluxation and dislocation is quite simple. अगर डिसलोकेशन है तो उसे एक्सटर्नल फोर्स की नीड है अपनी एनाटॉमिकल लोकेशन पे आने के लिए, हेल्प की नीड पड़ेगी. लेकिन अगर सबलक्सेशन है तो वो अपने आप रिलोकेट हो जाएगी. बॉडी विल relocate that bone itself. So let's start it. Knee dislocations occur when the triangular shaped bone, that is the patella, covering the knee, moves or slides out of the place. The problem usually occurs towards the outside of the leg, that is the patella bone. When it goes laterally or shifted laterally, that is called the patellar dislocation. It is most commonly occurred at the lateral side. So here you can see a very good diagram. So the dotted area is the normal patellar location, that is the patellofemoral groove in which the patella bone is situated. And you can see the patellar dislocation. It is out of its plane and out of its anatomical location. So here you can see a case. So this person having a patellar dislocation, as you can see, or judge also. Here is the X-ray of that person. So basically, you can see the arrowed part. It shows the patella, which is shifted laterally. Okay, so it is a very painful condition. The patient was unable to extend his leg. Unable. So here you can also see the redness over the skin. So it is basically due to the patellar dislocation, because when any bone dislocates from an anatomical location, it will injure the surrounding tissues, because that was not the original site where the bone belongs. So basically, it will injure the surrounding tissue. So it is a painful condition. What are the causes? If we talk about cause, so it usually most commonly seen in women or in sports players, and it usually occurs after a sudden change in direction. When your leg is planted, this puts your knee under pressure. So basically हमने एकदम को टर्न ले लिया, या एकदम जैसे खड़े हो गए, या कि जैसे गेम्स होते हैं, सॉकर हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, आइस हॉकीज हो गए. सो इस समय क्या है, एजिलिटी वाज द मेन फैक्टर. सो एजिलिटी क्या कि आप कितनी स्पीड से, कितनी एक्यूरेसी से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो एट अ हाई स्पीड. सो बेसिकली जब मस्कुलर इम्बैलेंसेस हो जाते हैं लिगामेंट लेक्सिटी की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से नी डिसलोकेशन हो सकता है. सो अब हम आगे चलते हैं. व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट ब्लो और द ट्रॉमा और इंजरी. सेकंड वन इज द upward twisting motions of the knee. Any upward twisting occur, it will lead to patellar dislocation, or if any direct blow or injury or trauma occur,
It will lead to subluxation also, dislocations also, and fractures also. Okay, so let's move forward. Sports commonly associated with patellar dislocations include soccer, gymnastics, and ice hockey. As I told, the patella wobbles out of the patellofemoral groove. Patellofemoral groove is the anatomical location where the patella belongs, usually to the lateral side of the knee. It is away from the midline of the body. This occurs when the quadriceps tendons and other ligament stabilizers attached to the borders of the ligament of the patella, contracts forcefully as the knee is rotating, pulling the patella out of the place. So basically मस्कुलर इम्बैलेंस हुआ, एक साइड की मसल स्ट्रांग हुई. फॉर एग्जांपल ये बोन है बीच में, एक साइड से वेस्टस लेटरालिस इसको बैलेंस बनाएगी, मीडियल साइड से इधर से वेस्टस लेटरालिस, सेंटर में रेक्टस फेमोरिस. अगर वीएमओ वीक हो गया तो व्हाट विल वेस्टस लेटरालिस डू? इट विल पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स साइड. सो जब वो पेटेला बाहर की तरफ जाएगा तो that will lead to subluxation also and dislocation also. First subluxations occur, then dislocation. Okay, so what are the predisposing factors? First is the age. 16 to 20 years, most common age, because this age group of population will indulge in sport activities. Okay, now the second was the gender. Females are more susceptible to patellar dislocations. Okay, athletic population, particularly in sports with twisting rotational motion of the knee, direct trauma to the knee. Second is the positive family history. So in 2006, a research was conducted, and they see that 24% of the people having patellar dislocations have a positive family history. And the third one is the anatomical factors. So this one was my favorite. So excessive Q angle. So Q angle is basically, as you all know, is formed between the ligamentum patellae and the quadriceps muscle. So if the angle is greater than 25 degrees, it will alter the vector forces which is happening or occurring on the knee. So when the force vector changes, it will change the direction of the force. It will destroy the biomechanics of the knee joint. So if the biomechanics is altered, then it will lead to dislocations. So due to malformed patella, knee joint patella situated abnormally higher on the knees than normal, slightly higher. And the third, last one is the insufficient Vmo. It is a Vmo weakness, vastus medialis oblique. So they also see in 2006. So normal function is to keep patella in stable position. So VMO का जो normal function है वो क्या है? पैटेला को एक stable position में रखना ताकि वो लेटरल की तरफ वेस्टस लेटरालिस उसे अपनी तरफ पुल ना करे. So vestus medialis main function was to stabilize the patella medially. Okay, so if the function is decreased, will result in the instability of the patella. If the instability occur, then what happened? If the VMO becomes weak and instability will occur, okay, then it will create tension on the patellofemoral ligament, and continuous tension on any elastic structure will lead to its deformation gradually with the time. Then ligament laxity occurs. Ligament laxity which further lead to patellar subluxation, then subluxation will ultimately lead to dislocations. So let's move forward. So what are the symptoms a patient can present to you, or when you're on field you can see injury? So what are the symptoms? How it looks? So knee appears to be deformed. Obviously, knee is bent and cannot straighten. Kneecap patella dislocates to the outside of the body, that is laterally, and knee pain and tenderness was present. Knee swelling was present. Yeah, slopey kneecap. So slopey means when the patella becomes hypermobile. And why this hypermobility comes? Because of the ligament laxity, because the VMO muscles was weak. Then it will create tension on the patellofemoral ligament again, and it will lead to hypermobility. And if any joint is hypermobile, it will lead to subluxation and ultimately lead to dislocations. So the first few times this occurs, you will feel pain.
and be unable to walk. However, if dislocations continue to occur and are untreated, if they left untreated, you may feel less pain and have less immediate disability. This is not a reason to avoid treatment. Kneecap dislocations damages your knee joint. So basically ये है कि अगर कोई प्लेयर है या कोई भी पेशेंट है, वो आपके पास हिस्ट्री लेके आया कि जी मेरा तो नी सबलक्सेट हो गया था, फिर वो रिलोकेट हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कई बार इंडिया में ऐसा ही होता है। इंडिया में जो पेशेंट होता है वो पहले खुद का इलाज करता है, अगर वो ठीक हो जाता है तो वो आगे के परिणाम नहीं सोचता है, वो ये सोचता है कि अभी तो मेरा काम चल रहा है। जब तक वो डॉक्टर के पास आता है तब तक उसकी हालत और ख़राब हो चुकी होती है। ये अनफॉर्चुनेटली होता है, इंडिया में तो होता ही है। सो इसका कुछ नहीं कर सकते, ये मेंटेलिटी तो रहेगी। बट हाँ, हम आगे चलते हैं। सो बेसिकली अगर डिसलोकेशन बार बार हो रहा है तो इट विल डैमेज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस भी आ जाते हैं नी में बिकॉज द कार्टिलेज गॉट डिस्ट्रक्टेड. So what are the physical examinations? So you will check the generalized ligament laxity. What was the gait pattern? Gait pattern was disturbed. Q angle, you will go for Q angle. And patellar glide test, lateral glide, the medial glide test you can do. And for muscular, you can check the flexibility of the hamstring muscle and the quadriceps group of muscle. Okay. So you can also check leg length discrepancies. In this patient, the patient must show leg length discrepancy in some cases. So area of possible referred pain was back and the hip. So this, as you can see, the area referred pain, here we can discuss referred pain means if a patient with knee dislocation complaining of pain in the back or hip, then it may be due to the patella dislocation. So हर बार कोई सिम्टम का जो रीज़न होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरे को कहा कि मुझे बैक पेन है, मुझे नहीं पता, पेशेंट आपके साथ बैक पेन का लेके, लेकिन आपने उसको बैक को ट्रीट कर दिया क्योंकि पेशेंट ने तो आपको नहीं बताया ना कि मेरे नी में भी दिक्कत, बट यू विल डू द जनरल असेसमेंट. सो इट मे बी ड्यू टू द patellar dislocation. So you must check that. Then the last one is the hip range of motion and flexion contractures. Now what is the first aid? So if you can straighten out the knee, if it is tucked and painful to move, stabilize, splint the knee and get medical attention. कभी भी फर्स्ट एड में उसको सीधा नहीं करना है, अगर वो फंसा हुआ है तो उसे वैसे ही रहने दो, स्प्लिंट लगा दो, स्टेबल कर दो उसे. ओके, दिस इज द फर्स्ट एड मैनेजमेंट. सो फर्स्ट एड मैनेजमेंट में यही होगा. उसके बाद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विल एग्जामिन द नी, दैट इज द प्रोफेशनल्स, which could confirm that the kneecap is dislocated or not. So a knee x-ray and sometimes MRI should be done to make sure that the dislocations did not cause a bone to break or cartilage to be damaged. So if tests show that you have no such damage, your knee will be placed into a immobilizer or cast to prevent you from moving it for several weeks. That is usually about up to 3 weeks. So अब जब उसका नी स्टेबल हो गया, कास्ट में है, 3 हफ्ते हो गए, so here the role of physiotherapist come. अब आप क्या करेंगे? एक पेशेंट है, 3 हफ्ते से कास्ट लग गया, सो बेसिकली क्या है, उसकी मोबिलिटी रुक गई, उसके जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ेगी, मसल स्टिफ होंगे, मसल वीक भी होंगे क्योंकि वेट बेयरिंग नहीं हो रही. सो हियर द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कम. सो बूम. So after this time, physical therapy can help build back your muscle strength and improve the knee range of motion. So if the knee remains unstable, you may need surgery to stabilize the kneecap. This may be done using arthroscopy or open surgery. So basically it's the surgeon's choice, and it depends on the variability or severity of the symptoms, which approach surgeon use. So when to contact a medical professional? It is very important. So when increased instability in your knees, when you feel more unstable, pain or swelling return after they went away, your injury does not appear to be getting better with time. इंजरी ठीक नहीं हो रही, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, वर्स होती जा रही है. So what are the treatment options? First one is the surgery, second one is the conservative. Surgery was open or arthroscopic, depend on the surgeon's opinion.
or patient consent is also important, what patient wants. So basically arthroscopic surgeries are most commonly these days because these are minimally invasive procedures, and if the procedure were minimally invasive, then the recovery was also good. So second one is the conservative, that is the rehabilitation part. So it is done by occupational therapist also and physiotherapist also. So in rehabilitation process, so we will start with the phase 1. So in phase 1, our goal is to control the swelling and pain management, and to maintain the knee in extension, improve static quadriceps strength. So basically in phase 1, static quadriceps strength is the main factor, because if the quadriceps are well strong enough to hold the patella in the anatomical location, then you can prevent the injury from reopening. Okay. So what was the time? So phase 1 was 0 to 2 weeks post injury exercise. So what is the program? Quadriceps drills in supine position, bilateral calf raises, hip abduction. Functional goal is the full weight bearing. हमारा जो functional goal होगा phase 1 का होगा full weight bearing. So move to phase 2. Phase 2 goals was no swelling, full extension. Swelling नहीं है, full extension आ चुका है नहीं. इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, उसके रेंज ऑफ मोशन पे काम करेंगे, उसकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ पे काम करेंगे. ठीक है, ये जनरली जो है 2 से 6 हफ्ते तक चलता है. सो एक्सरसाइज प्रोग्राम की बात करें तो रेंज ऑफ मोशन ड्रिल्स करवा सकते हैं. इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज करा सकते हैं वेरिएबिलिटी की, पैसिव भी करा सकते हैं, एक्टिव कराएंगे पेशेंट को, हील स्लाइड्स भी करवा सकते हैं. सो इसमें हम क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, मिनी स्क्वाट्स वी कैन ऐड, lunges, bridges, and hip abduction and extension with rubber tubing, so that is a TheraBand you can use, and single leg calf raises you can, and gait re-education. It is very important, gait re-education, because when patient started to limp because of the pain, so we need to correct the gait pattern. Okay, so balance and proprioceptive drills we will teach. Then the functional goal was the walking and exercise bike. Now let's move forward. So in phase 3, full range of motion, full strength and power. So इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें एडीएलएस पे वापस उसको लाना है कि वो रनिंग कर सके, जॉगिंग कर सके, अपनी एजिलिटी मूवमेंट कर सके, अपने बेसिकली में स्पोर्ट्स में उसको वापस भेजना है अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे पास. तो टाइम इसका 6 to 8 वीक्स होगा पोस्ट इंजरी. एक्सरसाइज प्रोग्राम सेम चलेगा फेज 2 का, बट इसमें हम क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज स्लाइटली डिफिकल्टीज. हम रेप्स बढ़ा सकते हैं, हम वेट बढ़ा सकते हैं. ओके, हम उसके एंड्योरेंस पे काम करेंगे, स्ट्रेंथ पे काम करेंगे. ओके, एजिलिटी ड्रिल्स पे काम करेंगे. ठीक है, अब जो हम स्क्वाट्स कराए थे, ठीक है, स्क्वाट्स को और डीप कर सकते हैं. ठीक है, सिंगल लेग प्रेसेस कराएंगे, जंप कराएंगे, सिंगल लेग स्क्वाट्स करा सकते हैं. सो व्हाट वाज द फंक्शनल गोल? फंक्शनल गोल वाज द स्ट्रेट लाइन जॉगिंग, ओके, स्ट्रेट लाइन रनिंग एंड प्रोग्रेशन टू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज. अगर कोई प्लेयर जो भी स्पोर्ट्स खेलता है उसके स्पेसिफिक एक्टिविटीज कराएंगे. सो द फेज 4 इज द गोल, रिटर्न टू द स्पोर्ट्स. इन फेज 4 हमें क्या करना है, पेशेंट को अब जो भी प्लेयर है उसको अपने स्पोर्ट्स में वापस भेजना है अल्टीमेटली, बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल, सो ही हैज टू प्ले अगेन. सो इन दिस द टाइम पीरियड वाज 8 to 12 weeks post. So what are the preventions? Preventions क्या क्या कर सकते हैं हम? So use proper techniques. So it is very important. अगर कोई कोच भी ट्रेन कर रहा है ना, तो उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए, एक वो टेक्निक से यूज कर रहा है नहीं कर रहा उसका प्लेयर, एंड सेकंड फैक्टर वाज द डाइट एंड न्यूट्रिशन. सो अगर प्लेयर डाइट सही ले रहा है तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. और डाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसको बहुत से लोग मिस करते हैं. ओके, सो डाइट पे एक अच्छा सा कंसंट्रेशन होना चाहिए प्लेयर का. सो प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए. ओके, और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज ऑलवेज होनी चाहिए. ओके, टू प्रिवेंट मस्कुलर इम्बैलेंस. ट्रेन होना चाहिए, ट्रेनिंग अपना रेगुलर करो. ठीक है, एज द प्रोटोकॉल वाज डिसाइडेड. If a physio is training, then physio will decide. If the trainer was there, then trainer will decide.
So in some cases of knee dislocations may not be preventable. कई बार हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, स्पेशली फिजिकल फैक्टर्स मेक यू मोर लाइकली टू डिसलोकेट योर नी. सो व्हाट वाज द फिजिकल फैक्टर्स, लाइक मैंने जैसे बताया आपको कि जैसे कि कोई प्लेयर है, अब उसको खेलना है, उसी से खेलते टाइम उसे इंजरी हुई थी, हम बस स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं प्रिवेंटिव. सो कई बार होता है कि सबलक्सेशन लिगामेंट लैक्सिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो रिलोकेट होता रहता है, डिसलोकेट भी होगा, रिलोकेट भी होगा, बट हमारा मेन अल्टीमेट गोल ये है कि हम अपने एंड से पूरी कोशिश करें कि वो दोबारा डिसलोकेट ना हो. सो थैंक यू सो मच for listening, and once again I would like to congrats all the physio team. Happy World Physiotherapy Day. All the best. Okay.